Class 6th Science Book Chapter 3, and the topic of this chapter is Fiber to Fabric. As an introduction, under this chapter we'll study fabric we wear in winter, means fabric, the cloth that we wear in winter. We wear wool, woolen cloths, silk, velvet, flannel. Fabric we wear in summer are cotton, linen, rayon. How to remember it? I said for winter I said winner. Who is winner? Who? We said wool. Who is winner? See them. Who is winner? See them. See for silk. Winner is very high. High 5 portion, yes. Who is fair? He is like a wall of India. Wall, wait. Who is winner? See them. Who is a wall of India in Indian cricket and flying high in the sky. Flannel. So generally, who is the winner? I said Virat Kohli is the winner. Who? Virat Kohli. See them. He is the wall of Indian cricket flying like anything in the sky. So who? Woolen. See them. He is wall of India and flying. Wall means velvet, flying means flannel. Summer. In the summer we are using cotton, linen, rayon. So some people become coolie and work harder, and some people become Ravan. Some people become coolie and work harder. Co for cotton, li for linen, and ra for rayon. So some people for summer become coolie. On the railway station, if you have seen कि लोग coolie होते हैं, and they used to carry the bags, बड़े बड़े heavy bags carry करते हैं. Some people become coolie and do the hard work. Some people रावण जैसे बन जाते हैं. So some for summer, coolie, cotton, linen, and ravan for rayon. This way you can remember fabric we wear in summer, cotton, linen, rayon. A part of there is some other are there, nylon, polyester. These are also fabric, but we do not wear it. Here you can see the cotton made sari is there. Then there is a wool, and with the help of this wool, there will be woolen cloth will be made. There is a silk sari. These are the fibers. With the help of that, these fabrics, cotton fabrics, silk fabrics has been made, and this is the woolen rayon. ये धागा है, so therefore it is yarn. It is what? Yarn. Yarn means धागा. Here you can see there is a nylon, there is a rayon. So nylon is little bit, I said, generally fancy dress and all during the winter the people used to wear, and the rayon, it is, you can see that it is lighter during the summer that people used to wear. These are the two fabrics. Nylon, these are, I said, synthetic fabric made with the chemicals. Under the fiber, all these fabrics are made up of fibers obtained from, so fabrics means the cloth. Fabrics, simple means it's cloth. And then fibers, if I say that it is the cotton, rui, different things are fiber that we are getting from the nature. And then from where the fibers we obtain? We obtain from the plants, we obtain from the animals, we obtain artificial. Plant, like we can say the cotton is a plant. Cotton is a plant through which we make cotton and then cotton textile. Jute is a plant through which we make different sacks. बोरी वगैरह बनाते हैं जूट फाइबर से. There is a silk is a plant on which some cocoon trees there and worms उसको खाकर उस silk produce करते हैं. Animals, like you know that sheep is producing wool, and with the help of wool we are making woolen cloths. So, and artificially that we are making chemical fibers like polyester, nylon, etc. So I said these are the fibers: cotton fiber, jute fiber, silk fiber.
Animal fibers, animal related fibers are sheep. You know that the भेड़ जो होते हैं, chemicals made, petrochemicals से artificially synthetic fiber उसको कहेंगे. And these are natural fibers, natural fiber, and this is what synthetic fiber means, man made fiber. Nature, if I am getting from the nature, that is natural fiber. If I am getting from the, yes, man made, that is known as synthetic fiber with the help of chemicals. Fiber can be of two types. One, it is natural fiber that we are getting from the nature, synthetic fiber that the man made fiber with the help of chemicals. Natural fibers. The fibers which are obtained from the plants and animals are known as natural fibers. तो जो fibers हमें मिलता है, fibers मतलब रेशा, धागा types, धागा से भी बहुत पतले पतले होते हैं. The fibers that which are obtained from plants and animals known as natural fibers. Like we can say the fibers that are obtained from the plants are known as plant fibers. Means it is also a natural fiber. Means if I am getting fiber from the plants, it is a plant fiber. And on the other hand, fibers that are obtained from the animals are known as animal fibers. Both these plant fibers and animal fibers are natural fibers. Here you can see there is some worms are there, and these worms used to eat these cocoon leaves and they produce silk के रेशा प्रोड्यूस करते हैं, सिल्क के रेशा. And there can be a mulberry, moga, tassar, eri, different types of 4 types of silk is there. So that it is, this is the way natural fiber we have. Synthetic fibers are the man-made fibers. Most of them are prepared from raw materials. Means raw materials, which type of raw material? Petroleum. So जहाँ petroleum निकलता है, there are so many chemicals are there, and these chemicals are actually petrochemicals. These petrochemicals, like if there is ethylene, with the help of ethylene, lots of ethylene get together, like they have been made poly, बहुत सारे, poly means बहुत सारे, one monomer convert into polymer means lots of get together become a polyethylene. Polyethylene has been made. If there is an ester is there, lots of ester get together become polyester. Similarly, there is what nylon, and these are, I said that with the help of petrochemicals, from their chemicals has been extracted, and this chemicals has been converted into different types of what? Yes, fabrics. Here examples of natural fibers are cotton and jute, whereas examples of synthetic fibers are nylon and polyester. And there are so many. So in this chapter, the topics will be covered is types of fibers. We'll see cotton fibers and the process of making fabric from cotton fiber. Now we'll see the jute fiber and process of making fabric, means cloth, from the jute fiber. Activities of weaving and knitting we'll see, and then we'll see history of clothing material. History of clothing material. Now some plant fibers, like we have to see cotton, and the source of cotton fiber is cotton plant. And here we can see this cotton plants are there, and here we have seen there is a cotton balls in the cotton plants, and these are of lemon shape, lemon size, and this is your black soil. So it grows on black soil and warm condition, not in the colder area, it grows in the warmer region like India, Egypt, and wherever there is a temperature is little higher, in that condition the cotton grows on the black soil and in the warm climate. Here it looks like snow, that you can say here that the whole this cotton plant covered with, all the field is covered with cotton plant, और लग रहा है कि snow भरा हुआ है. It is grown in the fields. कहाँ पे grow होता है cotton plant? In the fields. A cotton field that is ready for picking. Pick करने के लिए ready है. यहाँ पे दिख रहा है. It is ready for picking. It looks like a field covered with
snow. और picking मतलब तोड़ना, picking means तोड़ना. The fruits of the cotton plant, that is cotton balls. Here we can see there is a cotton balls. These are the fruits of the cotton plant. Are about the size of a lemon. After maturing, the balls burst open. और जैसे mature होता है तो इसके जो यहाँ पर you can see this ball of cotton that burst and giving us what? Cotton ball. The seeds covered with cotton fibers can be seen. Or in this cotton fiber, there will be small seeds will be there. There will be small seeds. As well as, so we have seen there will be a cotton plant and there is the cotton ball burst when it is ripened, and then it is this cotton is having covered with some seeds also we can see over there. There will be some seeds. The soil for this cotton is, the cotton plants are usually grown at places having black soil. जहाँ पे black soil होता है because black soil has good retention of water capability. And it is growing in the which condition? Warm climate, little warmer ho. State in India where cotton grown. In India, cotton is grown in 9 major cotton growing states. How many states? Major, but a part of it there is a 2-3 more states are there where it is in a minor states. In the major states, if we see, it has been divided into 3 major zone: northern zone, central zone, and southern zone. Northern zone, in the northern zone there is Punjab, Haryana, Rajasthan. In northern zone there is Punjab, Haryana and Rajasthan. This is your Punjab, this is your Haryana, and this is Rajasthan area. So in the northern zone cotton is being grown in Punjab, Haryana and Rajasthan. Thereafter there is coming of central zone. It covers Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh. And Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh. And in the southern zone, it covers Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. So here we can see that in the northern zone, yes, Punjab, Haryana and Rajasthan. In the northern zone, Punjab, Haryana and Rajasthan. And in this region, cotton is being grown, but it is not in high quantity. So northern zone is producing, but not in high quantity. But who is the high quantity producing? Gujarat number 1, Maharashtra number 2, and MP. So Madhya Pradesh. So these are the region in the central zone, and who is the number 1 in producing cotton? It is Gujarat. Second, it is Maharashtra. So Gujarat, Maharashtra, and MP is not the third, but it is coming under the central zone production. MP is also producing good amount in the Indore, Ujjain region. If we see which one is coming under the southern zone, it is Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. And southern zone is also producing states, but the Andhra Pradesh is the highest, and it is in the India. It is coming at the number of third number. Second Maharashtra, first Gujarat. So in the southern region zone, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu is producing cotton. A part of it, in some amount, it is being produced in Odisha. It is being produced in Odisha, Bihar, little bit in UP. So little bit in these zones we are also producing some cotton. So these are the states in where that cotton is being produced. So what are the important processes that cotton is converting into final fabric? So the first, if I am talking about first is picking. First is picking means from the plant breaking the cotton ball. First is picking. Second is ginning. Second is ginning means when the ball has been removed, cotton ball, so the cotton ball has cotton as well as seeds. So removal of cotton and seeds
separating the cotton purely and seeds separated, it is known as ginning. After that, third stage it comes where it is converting into yarn, and then yarn is converting into cotton fiber convert into thread, and the process is spinning. So third stage it is spinning, where that by twisting and rotating something, the fibers it convert into threads, and that is known as yarn. And then fourth stage, where vertically and horizontally these yarn or thread are arranged and it convert into fabric, and that is, this process is known as weaving. This process is known as weaving, or in the case of woolen it is known as knitting. वुलन क्लॉथ के लिए knitting कहा जाता है. So these are the four processes are picking, means from the cotton plant picking up the cotton ball, ginning, separating cotton and their seeds, spinning, those cotton fiber are twisted and spin to convert into thread, that is yarn, and weaving means, I said, making a cloth fabric. Here we are going to see ginning. So the ginning is done with the help of hands as well, and it is done with the help of machines as well. So hands and machine. Here we are watching that from the cotton balls, cotton is usually picked by the hand. So हम लोगों ने cotton निकाल लिया from the plants. Fibers are then separated from the seeds by combing. यहाँ पे आप देख रहे हैं, by combing they try to remove cotton here. Cotton is here and the seeds are separated by combing. This process is called ginning of cotton. So here you can see there is a cotton is there and there is a seeds. Cotton and seeds are separated. The process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand. बहुत समय से लगातार हमारी परंपराओं में it is done by the hand. That you can see in this picture that it is done by the hand. And these days machines are also used for ginning. You can see here there is a cotton ball with seeds. This is the cotton ball with seeds, and this cotton ball with seeds is going over there, and then when it is passing through this in this machine, then thereafter these seeds come out. There is seeds come out, and from thereafter the seeds come out here, and then cotton goes over there, and here it is that in a container cotton is accumulating. There is a cotton without seeds, pure cotton here it is, yes, and this is known as the cotton gin. इस मशीन को the cotton gin कहा जाता है. So this is with the help of machines ginning is done. Let us see about jute. In the jute, if we see the source of the jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. So if I say that there is what jute plants are there, these are what jute plants, and these jute plants are grown in the region where there is a good rainfall, अच्छा rainfall होता है, and when this jute plant has some flowers, then it is harvested. Harvested means then thereafter it is cut, and cut करके इसे पानी में डुबो दिया जाता है. It is immersed in water, पानी में डुबो दिया जाता है, so that these plants, these stems of these plants rot हो जाए, सड़ जाए. उसके बाद with the help of ants उसके रेशे को बाहर निकाल दिया जाता है, and here it is those removed one, and with the help of that these fibers of the jute are first arranged like this horizontally one, and then it is vertically, and this is the vertical one. Here it is vertically arranged, and then there it is horizontally arranged, and they spin together, interlaced together, and get bound together, and it is with the help of that we get the sacks. आपने बोरी कभी देखी होगी sacks, और ये जूट का sacks है, ये जूट का bag है. This is the bag. It is also made with the help of jute.
So jute fiber has been converted into fabric of jute sacks or jute bag. It means the jute is being grown in the rainy season, and the region where there is a good amount of rainfall take place. So jute is cultivated during the rainy season. जब rainy season होता है then it is cultivated. The jute plant is normally harvested. Harvested means कटा जाता है when it is at the flowering stage. जब यहाँ पे flowering stage इस पे आ जाता है then these jute plants are harvested means कट कर दिया जाता है. The stems of the harvested plants, jute plant का जो stem होता है, stems, these are the parts of the stems, are immersed in water for a few days. For few days के लिए उसको पानी में डुबो दिया जाता है and the stems rot. उसके बाद stems सड़ जाता है और सड़ने के बाद उसके fibers को separated हाथ से छिल कर निकाल लिया जाता है. Fibers are separated by hand and उस fibers से then we start weaving, and then this structure, so we are able to get the sacks, bags and all. The state in India where cotton is being grown. The cotton is being grown, number one is West Bengal. Number one is West Bengal. यहाँ पर 80% cotton भारत का 80% cotton is being produced. Thereafter it is coming of second number Assam. Third number it is Bihar, you can say. And thereafter Andhra Pradesh, fourth number, and then Odisha. So these are the states where that West Bengal, Bihar, Assam, West Bengal, Assam, Bihar, Andhra Pradesh, Odisha. These are the states where we are producing jute. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. A part of it Andhra Pradesh and Odisha as well. What is yarn and how to make yarn? Yarn means thread. You know that yarn, there is a cotton fiber, lots of cotton fibers are there, very thin. And then these thin fibers twist करते हैं, twist. और जैसे जैसे twist करेंगे, घुमाएंगे, twist करते रहेंगे बहुत सारे फाइबर को, धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? A thread. And this thread is known as yarn. This thread is known as yarn. By twisting, by I said that spinning, that is converted into thread. Now the thread are, I said that make arranged in the two form. Horizontally it is arranged, and if we arrange it and then also arrange it vertically, this is the vertically arranged, and thereafter horizontally arranged, and they are interlaced, interlooped or bound together, and this way we are able to get fabric. So here we have a fiber. Fiber is converting into yarn, और बहुत सारे yarn को horizontally and vertically arrange करके एक दूसरे से bond together कर fabric means cloth बन जाता है. And यहाँ पर ही फाइबर, यहाँ पे प्लांट से पिकिंग होती है. यार्न में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? स्पिनिंग करके यार्न बनाते हैं. एंड फैब्रिक बनाने के लिए हम लोग को वीविंग, वो भी मैं ये जिस तरीके से हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जो अरेंज करके एक दूसरे से बॉन्ड टुगेदर कर रहे हैं, दैट इज व्हाट? वीविंग. और यदि विलन क्लास का करते हैं तो उसको बोलते हैं निटिंग. सो yarn is a spun means spin का second third form. yarn को घुमा दिया जाता है, टर्न किया जाता है, spun, and thread which is used for weaving or knitting fabrics. तो yarn एक क्या है? spun है, और thread है, spun से बनाया हुआ thread है, spinning करके बनाया हुआ thread है, और इसका यूज होता है किसके लिए? weaving और knitting, मतलब weaving से फैब्रिक बनाने के लिए, या knitting से फैब्रिक मतलब वुलन क्लॉथ. Yarn is a long thread which is used for making fabrics. Yarn क्या होता है? एक long thread होता है, बड़ा thread होता है जिससे कि फैब्रिक बनाते हैं. And fabrics are made up of yarns. और yarn से क्या बनेगा? फैब्रिक, which are in turn made from the fibers. तो फाइबर से क्या बना? Yes, फाइबर से what it is formed? yarn thread बना, और yarn से क्या बना? फैब्रिक, that is cloths, fiber. So this way you have been able to see that yarn क्या है? It is in a what? Thread. And spinning is a method to what? Make in a yarn. Here you can see that there is in a what? It is in a spindle. ये spindle है, और यहाँ से ये
कॉटन का फाइबर है, इसको खींच खींच के इसमें घुमा दिया जाता है स्पिन करके, और इस तरीके से ये क्या बन जा रहा है आपको, यार्न या यू कैन से थ्रेड वी आर एबल टू गेट। और महात्मा गांधी द्वारा फेमस है चरखा, यहाँ से भी ऐसे लिया जाता है, कॉटन फाइबर को खींचते हैं और इसको टर्न करते हुए इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू थ्रेड दैट इज़ यार्न। तो और इसीलिए महात्मा गांधी का कॉटन टेक्सटाइल, द कॉटन से खादी वस्त्र बनाना जो फेमस हुआ था ये चरखा की वजह से ही। सो आई सेड स्पिनिंग, परहैप्स यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पिनिंग। स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम द फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो फाइबर से yarn बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज व्हाट इट इज नॉन एज स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन, बहुत सारा कॉटन ले लिया या उलन से ले लिया और उसको ड्रॉन आउट, उसको खींचते हैं और ट्विस्ट कर देते हैं, तो ट्विस्टेड टुगेदर, एंड देन दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर। और ट्विस्ट करेंगे तो जितने भी फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स, छोटे छोटे फाइबर्स होंगे, बहुत छोटे छोटे, यहाँ दिख रहा है बहुत छोटे छोटे, और उसको ट्विस्ट टुगेदर कर देंगे तो दे विल कन्वर्ट इनटू yarn और थ्रेड। Devices used for spinning are hand spindle, are also called takli. This is what hand spindle. This is what hand spindle, and this is what charkha. This is what charkha you can say. This is the spindle one. ये आपका क्या है, चरखा। This is what spindle, hand से चलाने वाला। So hand spindle, and what I said that this is also known as a takli. And there is an also charkha used to make yarn with the help of spinning. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machine. Spinning machine से आप बड़े बड़े स्तर पर, आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, in the big industries, that is spinning machine is there, and they do not use hand spindle or charkha. But at village level, at smaller scale, the people use this one. I said spinning hand spindle or charkha. After spinning, yarns are used for making fabric. जब तक yarn नहीं बनेगा तो उससे fabric नहीं बनेगा। तो first we have to make yarn, then it will convert into fabrics. Let us see. Here you can see that in this region we have picked up cotton fiber in one hand, and here it is one hand we have picked up, and we have pulled it, and after pulling it, when you pulled it in the opposite direction, then what happened, and thereafter twist, it will convert into yarn. So this is the process of making yarn. I said hold some cotton wool in your one hand and pinch some cotton between the thumb and your forefinger of the other hand. दोनों तरफ से पकड़ लें. Now gently start pulling out the cotton. Gently start pulling out the cotton. Pull करने लगे. While continuously twisting the fibers or continuously twist करें, then you will get the yarn-like structure is formed. This is one of the activity you can see. Here you can see that Mahatma Gandhi, Mr. Mahatma Gandhi, the father of the nation, is using charkha. He is using charkha, and he said his own, that he said he is the Indian people to use charkha and make your yarn, and with the help of yarn आप अपना फैब्रिक खादी वस्त्र बनाएं और उसी को पहने. क्योंकि क्या होता था, ब्रिटिशर्स, यदि आप अपना पहनेंगे तो आप ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ खरीदेंगे नहीं, और खरीदेंगे नहीं तो उनके पास पैसा नहीं होगा, तो फिर वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगे. तो महात्मा गांधी ने बोला यू हैव टू वियर योर ओन क्लॉथ, खादी वस्त्र अपना खुद का पहनना चाहिए. और ये इंडियन का इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, आप कभी फ़ोटो में देखे हों, जिससे भारत को आज़ादी अंग्रेजों से मिल सके, ब्रिटिशर्स से. सो हियर यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट. तो जो हमारा आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उसका एक पार्ट था, महात्मा गांधी हैज़ पॉपुलराइज्ड चरखा उसके लिए. ही इनकरेज्ड पीपल टू वियर क्लॉथ्स मेड अप ऑफ होम स्पून. आप अपने घर में जो स्पन करके यार्न बनाए, and then termed as khadi and imported
एंड आपको स्टॉप कर देना होगा इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ द ब्रिटेन। ब्रिटेन के इंडस्ट्री में, मिल्स का मतलब इंडस्ट्री में बना हुआ क्लॉथ को आप नहीं इंपोर्ट करके पहने, बल्कि आपको कौन सा पहनना चाहिए? यस, जो खादी का आप अपने घर में बनाए हैं। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी। बॉडी मतलब आज़ादी के बाद आफ्टर बॉडी इंडियन गवर्नमेंट ने एक कंस्टिट्यूट किया। कंस्टिट्यूट मतलब बनाया। क्या किया? बनाया, एक बॉडी बनाया, मतलब एक डिपार्टमेंट बनाया कहने का मतलब। एंड इट इज कॉल्ड खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। और इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, और उस समय हमारे देश आज़ाद हो गया। और उसके 9 ईयर्स के बाद, आफ्टर 9 ईयर्स, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन हैज़ बीन constituted, has been made. Now we have to see what is weaving. There are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. In the weaving, what is happening? We are making the threads or yarn vertically like this, in one arrangement like this, and another arrangement it is horizontally putting and एक दूसरे से फंसे हुए बॉन्ड इंटरलेस टुगेदर, एंड दिस वे वी आर एबल टू गेट दैट व्हाट? क्लॉथ्स मीन्स फैब्रिक. सो द प्रोसेस, इफ आई से what is the weaving? The process of arranging two sets of yarns. Two sets of yarns means one it is vertically and another it is horizontally. Two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. The process of arranging, अरेंज करना आपको, तो टू सेट्स ऑफ yarn को, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर, और उससे कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? फैब्रिक, कपड़ा बन जाएगा. टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड weaving. Let us see some activity. Take two sets of paper of different colors and cut a square piece of length and width equal to 30 centimeter from each set. तो यहाँ पे there is a two sets of paper is there, red and green, and that this is suppose 30 centimeter made. It is a square. Square में क्या होता है? All sides are equal. ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 सेंटीमीटर. तो जब सबका लेंथ एक जैसा हो, दैट इज स्क्वायर. फिर इसको बीच में से फोल्ड कर दिया गया, एंड फोल्ड करके आपका ऐसा हो गया. तो यहाँ से आपने देखा कि इट हैज़ बीन फोल्डेड, और इसको भी ऐसे फोल्ड कर दिया बीच में से. इट इज मेड. एंड नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ. अब वो आधा हो गया. बोथ द शीट्स इनटू हाफ. ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शॉन इन द फिगर 3.12. ये जो लाइन बना हुआ है, ऐसा ही आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है. यस, ऐसे लाइन्स. एंड ऑन द अदर एज शॉन इन द फिगर 3.12 भी ए में एंड बी में जैसा बना हुआ है. एंड कट बोथ द शीट्स along द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड. उसके बाद बोला कि डॉटेड लाइन्स पे है, उसको कट कर दें और उसको अनफोल्ड खोल दें. उसके बाद व्हाट वी विल बी एबल टू गेट, तो जो हमें मिल जाएगा उसको वीविंग करनी है. तो हमने क्या किया? द रेड वन हैज़ बीन मेड लाइक दिस. दो पेपर्स के पतले पतले स्ट्रिप्स थे. एंड green one has been what? Knitted like this. It is waved like this. So weaving is done, and this way we will be able to get a kind of cloth. इसी तरीके से ही आप जो देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे अंदर घुसा, ये आप देख रहे हैं, यू कैन सी ये अंदर घुसा, फिर यहाँ निकला, ऐसे निकला, ये weaving हो गया. यहाँ से भी ये रेड वाला ऐसे घुसा, अंदर गया, निकला ऐसे. So this way you can see that weaving has been done and we have been bound together. और पूरा इसमें कोई जगह नहीं है, और आप देख सकते हैं, and we have been able to get the fabric. इसी पेपर का जैसे आप कर रहे हैं, इसी तरह मशीनों में भी weaving करके फैब्रिक बनाया जाता है. Weave the strips one by one through the cuts. जैसे कटा हुआ जितने भी हैं स्ट्रिप्स, उसको one by one क्या करें? वीव करें. वीव का मतलब है जाल में ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक का जाल बनाते चलें, एक का ऊपर एक, उसके ऊपर रेड, ऐसा जाल बनाते चलें. वन बाई वन थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ पेपर एज शॉन इन द फिगर 3.12 सी में जैसे दिखाया हुआ है, एंड इन 3.12 डी.
इट शोज दैट पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। जब ये और सभी स्ट्रिप्स को आपने ऐसे कर दिया तो ये इस प्रकार से दिखेगा और यही इसी प्रकार से क्लॉथ भी बन जाता है। इन अ सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ यार्न, धागे भी जो होते हैं आर विवन टू मेक अ फैब्रिक। वीव का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगा विवन। वीव है, वीव का मतलब आपको जाल बनाना है दोनों सेट से, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और वो क्या हो जाएगा आपका फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा, वोवन टू मेक अ fabric. Here you can see in the house there is an, I said, one set, एक set, one set it is this way it is arranged and another one it is arranged, and then in the house she is putting their hand this and this side up and down, पूछे खींचे जा रही हैं और धीरे धीरे वो जाल बनाते जा रही हैं और ये हमारा क्या बन जाएगा फैब्रिक। तो ये हाथ से बन रहा है तो इसको बोला जाएगा, जैसे बना रहे हैं वो उसको बोला जाता है हैंडलूम। जो मशीन छोटी सी गांव में रहता है, विलेज एरिया में, स्मॉल रीजन में होता है, तो इसको बोलेंगे हैंड से बनाया हुआ लूम। जब इलेक्ट्रिसिटी से यही काम किया जाए बड़ी मशीन पर तो उसको बोलेंगे पावर लूम। सो पावर लूम जो होगा बड़े बड़े इंडस्ट्री में होगी, मशीन ये सब काम करेगा। जब हाथ से इंसान करेगा तो दैट इज व्हेन द ह्यूमन बीइंग इज डूइंग, इट इज नोन एज हैंडलूम। The yarns are much thinner than our paper. पेपर से भी बहुत पतला होता है yarn strips. Of course, weaving of the fabric is done on looms. कहाँ पे weaving होता है? looms पे होता है। और the looms are either hand operated or power operated. जो हाथ से करा जाएगा that is known as a hand loom, and those who are through the electricity it is known as power loom. Knitting. In the knitting में अभी आप you can see the especially इट इज़ फॉर द वुलन क्लॉथ। किसके लिए होता है? वुलन। और वुलन हमें फाइबर कहाँ से मिलता है? शीप से, भेड़ से मिलता है। और उसका एक धागा लेकर पहले वुलन से हम लोग उसको फाइबर से थ्रेड बना लेते हैं, हमें फाइबर मिला, वी हैव गॉट द फाइबर, फाइबर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू थ्रेड मीन्स यार्न। और आपको पता है स्पिनिंग करके यार्न बना लिया जाता है, दैट इज दिस इज द यार्न इटसेल्फ। अब ये यार्न है, आपने सो मेनी लेडीज़ को, ओल्ड लेडीज़ को देखा होगा कि घर में बैठे हुए वुलन क्लॉथ से वो आपको वुलन वूल से लेकर दे आर मेकिंग वुलन क्लॉथ्स। दिस इज व्हाट वुलन। इसमें भी आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली वीविंग हो रहा है, लेकिन ये इस वीविंग को बोला जाता है निटिंग। दिस इज नॉन एज व्हाट? निटिंग। सो हियर वी कैन से इन निटिंग अ सिंगल यार्न, एक सिंगल यार्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द सिंगल यार्न। अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, उसी से फैब्रिक बनाया जाता है। सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली, लोग लगातार लेकर ऐसे खींचते रहते हैं और उससे और एक जाल बना देते हैं, पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। जैसे आपने कभी सॉक्स पहने हो, बच्चों का सॉक्स देखा होगा, बना होगा वुलन का ठंडे विंटर में। मैनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर आल्सो मेड ऑफ नीटेड फैब्रिक्स। बहुत सारी चीज़ें जो है नीटेड फैब्रिक्स, विंटर के पीरियड में दैट पीपल आर वियरिंग दिस वुलन नीटेड फैब्रिक्स। नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन, बड़े बड़े मशीन में वीविंग होता है। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक दैट वीविंग। फाइनली वीविंग जो कॉटन का होगा, नीटिंग वुल के लिए होगा, इसके बाद ही फैब्रिक बन जाता है। एंड दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। अब क्लॉथिंग आइटम्स को वेराइटी का पहना जाता है। हियर यू कैन सी दैट द grandmother is knitting the cloth. Cloth means fabric. History of clothing material. Have you ever wondered what materials people used in ancient times for cloths? क्या आपको कभी वंडर किया है कि एंशिएंट टाइम्स, बहुत पहले लोग कैसे किस चीज़ का बना हुआ क्लॉथ पहनते थे? It appears that those times people used the bark and big leaves of the tree or animal skins and furs to cover themselves. So in the earlier times what the people are doing, like there is a big tree is there, तो उसके एक तो लीव्स को मिलाकर, पत्ते बनाकर, सुखाकर, उसको टाइट करके उसके कपड़े पहनते थे। और ये जो आउटर पार्ट है, बार्क है, हार्ड बार्क जो है, इसके हेल्प से कपड़े बनाते थे। साथ में एनिमल का जो आउटर स्किन है उसको, और उसके कभी कभी कई एनिमल्स देखेंगे उसके बाहर बहुत सारे फर होते हैं, बाल होते हैं, उसके फर से अपने बॉडी को कवर करने का तरीका होता था। तो लिप्स है, बार्क है, एंड देन स्किन एंड फर दैट द पीपल यूज्ड टू कवर देमसेल्व्स।
आफ्टर पीपल बिगैन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, कुछ दिनों के बाद, पहले उनके पास एग्रीकल्चर भी नहीं था, बहुत पहले हजारों साल पहले, तो ये क्या करते थे, लिप्स, बार्क, स्किन और फर पहनते थे। धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर करने लगे, खेती करने लगे, एंड दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। धीरे धीरे वो क्या करने लगे, ट्विग्स, लकड़ी के टुकड़े होते थे, एंड देन दोज पीसेस ऑफ लकड़ी, ट्विग्स, उससे भी वो मोड़ मोड़ कर कुछ बना देते, और इससे धीरे धीरे वो बास्केट बना देते। क्या बना देते, बास्केट। और ग्रास के हेल्प से, ग्रास, बड़े बड़े ग्रास लेते और उसको वीविंग कर उससे मैट्स बना देते थे। तो मैट्स भी बना दिया और साथ में बास्केट भी ट्विग्स से। बास्केट किससे बनाया, ट्विग्स से। तो जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, द पीपल स्टार्ट मेकिंग mats and baskets with the help of twigs and grass. Vines, animal fleece here were twisted together into long strands. Vines का मतलब है कि जो बड़े बड़े पेड़ की लताएं होती थी वो वाइन्स हैं, उनके साथ भी वो ट्विस्ट करके उसको बड़ा बनाकर फिर स्ट्रैंड, उनका बड़ा बड़ा ये स्ट्रैंड बना दिया बड़े बड़े, और उसके हेल्प से वो कई चीज़ें अपनी बनाते थे, फैब्रिक्स तैयार करते थे और उसको विवन करके। सो वाइन्स का मतलब बड़े बड़े लताएं हों, एनिमल के फ्लीस और उनके बालों से भी ऐसा करके वो बनाते थे। एंड इस तरीके से दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, वो फैब्रिक्स बना लेते थे। द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन, पहले के लोग इंडस रिवर के आसपास, गंगा रिवर के आसपास, दैट दे ग्रीव, और वो कॉटन के बनाते थे। उस समय उनके पास एग्रीकल्चर आ चुका था और बहुत कॉटन प्रोड्यूस करे थे। दैट ग्रीव इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा एंड इंडस रिवर। तो इंडियंस बहुत आज से लगभग 4000-5000 साल पहले, 4000 to 5000 ईयर्स बैक, 4000 to 5000 ईयर्स बैक, वो लोग क्या करते थे, कॉटन से करते थे। कॉटन वो प्रोड्यूस करते थे। सोच सकते हैं आपको दैट टाइम कि लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इंडियंस आर स्मार्ट। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स? तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लॉथ्स में एंशिएंट टाइम्स में क्या हो रहा होगा। यस, द पीपल आर कॉटन से ले आए थे, लेकिन यदि पहले आप जाएं तो ट्विग्स, वाइन्स, ग्रासेस, बार्क, लीव्स, इससे वो बनाते थे अपने क्लॉथ्स। एनिमल स्किन्स and then fur of the animals they used to cover themselves. Flax is also a plant that gives natural fiber. Flax एक इस प्रकार का सन मतलब सन की लकड़ी होती है जिसको बोलते हैं फ्लैक्स, और वाइट का रहता है, और इसके जो इसके ऊपर से ये छिलकर हटा देते हैं, फिर हमें क्या मिल जाता है, फाइबर्स मिल जाता है, हटा देते हैं, और फिर उस फाइबर से हम फिर वीविंग कर फिर क्लॉथ्स बना लिया जाता है। तो फ्लैक्स प्लांट से भी बनाया जाता था। तो फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। इन एंशिएंट इजिप्ट, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स। सो इजिप्ट जो आप देखेंगे, इन अफ्रीका you can say that there is an Egypt one country, and nearby that Nile river is passing. This is what? Nile river. और इसी के पास कॉटन ग्रो किया जाता था, एंड देन दे आर मेकिंग देयर क्लॉथ्स। तो इजिप्ट से जो है, ये जो कंट्री है इसका नाम क्या है, इजिप्ट, और यहाँ पे नाइल रिवर पर। तो उस समय भी एंशिएंट टाइम में कॉटन एंड फ्लैक्स से दो दे यूज टू मेक देयर, वो उसको कल्टीवेट करते थे और उससे क्लॉथ्स, फैब्रिक्स दे यूज टू मेक। सो इन एंशिएंट इजिप्ट, that is in Africa, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. In those days stitching was not known. उनको स्टिचिंग, सिलाई नहीं आती थी, तो वो कपड़े को अपने शरीर पर नीचे बांध लिया, ऊपर टांग लिया, ड्रैप्स कर लिया, तो इस तरीके से वो पहनते थे। तो दिस पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, वहाँ पर बांध लेते थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे, क्योंकि दैट टाइम स्टिचिंग मतलब सिलाई नहीं था। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, बहुत तरीके टेक्निक्स आए। कपड़ा लटका लिया, दोनों तरफ से बीच से काट लिया और सर में घुसाकर, सर के ऊपर से फटा हुआ रहेगा, घुसा लेंगे
और शरीर के चारों तरफ बांध लेंगे उसको, तो आपका सर के चारों तरफ कपड़ा आ गया और उसको आप बांध लिए, फिर नीचे साड़ी की तरह कुछ लपेट लिए, लुंगी वगैरह एंड ऑल। विद द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। और जैसे जैसे स्विंग नीडल आ गया, मशीन, सिलाई करने की मशीन, उसका नीडल आ गया, तो पीपल ने स्टिच करने लगे और विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स बनने लगा। और स्टिच क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ तो बड़ी डिजाइनिंग कपड़े बनने लग गए। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। आज आप देखेंगे कि इवन टुडे साड़ी भी ऐसे ही लपेट लिया जाता है, वहाँ पे कोई स्टिचिंग नहीं होती है, नीचे धोती हो, लुंगी हो, टर्बन, सर पे टर्बन बांधना, यहाँ पे स्टिच नहीं है। इसका मतलब है कि पुरानी कुछ चीज़ें आप लोग हम अभी भी बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। वी आर यूजिंग इट इन अ बेटर वे। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, हमारे कंट्री में बहुत सारी वेराइटी में फूड अलग अलग खाया जाता है। अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन द फैब्रिक्स में भी बहुत सारे वेराइटी है। साउथ में सिल्क ज़्यादा होता है, तो सिल्क रिलेटेड फैब्रिक्स बनाया जाता है, कॉटन भी होता है, तो दैट इज़ व्हाट आई सेड दैट वहाँ पर अलग। नॉर्थ में आपको क्या होगा, देर विल बी, आई सेड वुलन है, देर इज विल बी, यस, कॉटन भी है, तो वैरायटी है। और बहुत साथ सिंथेटिक फाइबर्स आज के डेट में, नायलन आ गया, पॉलिस्टर आ गया, तो सो मेनी थिंग्स दैट द पीपल स्टार्टेड डूइंग। तो देर इज आल्सो वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम्स इन आवर इंडिया। फूड की वेराइटी भी है, क्लॉथ की भी, फैब्रिक्स की भी वेराइटी इन आवर इंडिया। लेट्स रिकैप दिस चैप्टर। इस चैप्टर को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। देर इज अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। शॉर्ट में रिकैप का मतलब होता है, थोड़ा शॉर्ट में समझ लें उसे। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, यार्न मतलब धागे से, विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, मतलब और यार्न किससे बना है, फाइबर से बना है। फाइबर्स आर इधर नेचुरल, फाइबर या तो नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी, मैन मेड हो सकता है। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स, आप जानते होंगे। while nylon and polyesters are some examples of synthetic fibers. Fibers like cotton and jute are obtained from the plants. Yes, cotton and jute किससे करते हैं, plant से। The process of making yarn from the fibers is called spinning. अब फाइबर से जो हम स्पिन करके, ट्विस्ट करके जो यार्न बनाते हैं, दैट इज नॉन एज स्पिनिंग। फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग। अब फैब्रिक, कपड़ा बनाएंगे तो उस यार्न से, धागे से, वीविंग से बनाएंगे, या एंड एज वेल एज विथ द हेल्प ऑफ निटिंग।